टू कॉर्टेक्स आज हम करने वाले हैं एंटिटी एंड सेंटिमेंट एनालिसिस विद द नेचुरल लैंग्वेज एपीआई। सो फर्स्ट यू विल क्लिक स्टार्ट लैब। इसके बाद हम इसे इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। लिखा है अंडरस्टैंड। लिखा है एग्री एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ से हमें ट्यूटोरियल को क्लोज करना है। क्लिक टास्क में। First you have to create an API key. So for that, go to API and services, credentials, click create credentials, then click on API key. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे API की जनरेट हो गया है, तो हम इसे कॉपी करेंगे। देन यहाँ एक नए टैब में पेस्ट कर देंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसे रखना है ताकि आगे यूज कर सकें। क्लोज। क्लिक चेक माई प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमें कंप्यूट इंजन पर जाना है। गो टू VM इंस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास पहले से लिनक्स इंस्टेंस नाम का एक इंस्टेंस बना हुआ मिलेगा, जिसमें हमें SSH पे क्लिक करना है। दिस कमांड पेस्ट इट हियर। देन हमें योर API की वाला पार्ट यहाँ से हटा देना है, जो कि इक्वल्स टू के बाद है। देन इसकी जगह पे हमें ये API की कॉपी करना है, जो हमने पहले यहाँ पे लिखा था। यहाँ पेस्ट कर देना है। Then hit enter. Task 2 is to make an entity analysis request. So for that, copy this. This will create a file named request.json and open its editor. Paste this editor here. Then Control X, Y, enter. Now the file is saved. Click check my progress. After this is completed, हम task 3 पे आ जाएंगे, जिसमें we have to call the natural language API. First, we will run this curl command in the SSH. After running this command, we will go back here, copy this, paste the cat result.json. Click check my progress. It is also completed. Now, इसके बाद हमें और कोई टास्क नहीं करना है। चेक माई प्रोग्रेस आखिरी वहीं तक था। So congratulations, this lab is now complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Now you can just simply end this lab.